Hello friends, today I am going to revise lesson number 15, David Livingstone. I will read and explain the chapter. Seldom are God's giants honored by the world, but David Livingstone joins the select band of the greatest explorers like Marco Polo, Christopher Columbus, Neil Armstrong, Edmund Hillary and the like. To top it all, David Livingstone did not explore for the sake of exploration only, but also for his missionary zeal. And as a consequence to this, he opened the vast continent of Africa to the rest of the world. Until then, the people had little knowledge about the interior parts of Africa. No one had visited those parts. David Livingstone was the first to do so. सो दिस डेविड लिविंगस्टोन जो है वो कई महान लोगों की गिनती में आते हैं, चाहे वो मार्को पोलो हो, चाहे वो क्रिस्टोफर हो, चाहे क्रिस्टोफर कोलंबस हो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कोई भी हो, उन सब में इनकी गिनती की जाती है क्योंकि इन्होंने वो काम किया जो और लोगों ने नहीं किया था। जो मार्को पोलो है, क्रिस्टोफर कोलंबस है, इन लोगों ने शायद सिर्फ समुद्री रास्ता खोजा था अफ्रीका तक जाने का, लेकिन डॉक्टर लिविंगस्टोन ने सेंट्रल अफ्रीका तक उन्होंने रास्ता खोजा। मतलब जो कोस्टल एरिया है उसके भी अंदर जाके, तो अंदर जाना मतलब खतरे से खाली नहीं था क्योंकि रास्ता बहुत भयावानी है, बहुत डेंजरस रास्ते थे और जंगली जानवर भी थे, तो लेकिन लिविंगस्टोन ने उसको चुना और वो चले गए। इसीलिए आज भी डेविड लिविंगस्टोन को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। The task was not easy. He had to journey through thick forests, marshy lands, flooded rivers and dangerous waterfalls. The jungles were full of fierce animals and poisonous serpents. These jungles were filled with insects of various kinds which caused many diseases. David Livingstone fell ill several times during his journey. He had to stop the journey for several months, facing many hardships. David Livingstone, a medical missionary and explorer, reached Central Africa where no white man had ever set foot before. तो जो यात्रा थी बहुत आसान नहीं था, बहुत ही खतरों से भरा हुआ था। When he went into that, he had to go to thick forest, बहुत ही भयावह जंगल में जाना था। बहुत सारे नदियाँ थी जिसमें बाढ़ आई हुई थी, उन सबको क्रॉस करके उनको जाना था और जंगल में खतरनाक जानवर भी थे और जो मच्छर थे उनसे उनको बीमारी भी हो गई थी, वो कई बार बीमार भी पड़ चुके थे अपने यात्रा में। इन सब खतरों को झेलते हुए इस यात्रा को पूरा करते हुए वो सेंट्रल अफ्रीका के मध्य में जाके पहुंचे थे। वहाँ वो पहले व्यक्ति जो वहाँ पहुंचे थे। His ambition was to help the natives. Hundreds had died due to lack of proper medical help. This had prompted Livingstone to come to Africa. Wherever he went, he set up small hospitals where the natives could get treatment for various ailments. He also brought Christianity to the land. He tried hard to remove their superstitious and evil practices. उनका मिशन क्या था, वो क्या चाहते थे? डेविड लिविंगस्टोन सिर्फ यही चाहते थे कि वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों को सही तरीके से, सही ढंग से मेडिसिन दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग बीमारी से मर रहे थे और वो सबके सब अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास रखते थे, अंधविश्वासी थे वो लोग। तो जादू टोना करना, जड़ी बूटी से करना, वो कोशिश उसी में लगे रहते। इससे क्या होता था कि लोग जल्दी मर जाते थे। बट ही केम टू हेल्प देम आउट by giving medicine. So wherever he went, he used to establish a kind of a small clinic and give them proper medicine and protect them from the different diseases. And he tried to bring them up from this superstitious, जो अंधविश्वास था, उससे उन लोगों को वो ऊपर उठाना लगे, उनको उससे बचाना शुरू किया। One thing always saddened him. White men used to come to Africa and capture black men, women and even little boys and girls and sold them as slaves. It was an inhuman practice. He wrote against this custom. When he visited his native country, he spoke against this evil practice to his own people. He did a great deal for stopping the practice of slavery.
डेविड लिविंगस्टोन ही थे जिन्होंने ईसाई धर्म को भी वहाँ लेकर आए थे। उन्होंने वहाँ पे जो फादर्स हैं उन लोगों को वहाँ लेकर आए, जिससे कि वो उनको नैतिक शिक्षा, मॉरल वैल्यूज़ उनको सिखा सके, उनको ढंग से रहने का तरीका समझा सके। वो सब भी इन्होंने किया। इनको एक हमेशा एक दुख रहता था कि जो लोग आते, जो अंग्रेज़ आते थे, वो लोग यहाँ के निवासियों को, जो ब्लैक पीपल है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, यहाँ तक कि बच्चों को भी अपने साथ लेके जाते थे। क्या करने के लिए? गुलामी करवाने के लिए। इन लोगों को गुलाम बना के अपने देश लेके जाते थे। सो डेविड लिविंगस्टोन डिड नॉट लाइक दिस। ही वॉज वेरी मच disheartened. He was very sad that these people, the English people, used to come and take this men and women, black men and women, even children, to take them as slaves, to make them to work as slaves. So he did not like this. So whenever he used to visit his country, he used to speak against this slavery, and he tried to stop it. Maximum he tried to stop it. उन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये जो गुलाम बनाने का जो रिवाज चला है अंग्रेजों की तरफ से, उसे वो किसी तरह बंद कर सके, लेकिन वो अपनी कोशिश वो करते रहे। Livingstone made several journeys into the interiors of Africa and discovered many unknown lakes, rivers, and waterfalls. For many years, there was no news about Livingstone. Some thought that he had died in the jungles of Africa, but many of his friends refused to believe rumors of his death. In order to find out the truth, an American newspaper sent a young man named Morton Stanley to Africa. अब क्या हुआ कि वो इतने साल से अफ्रीका में रह रहे थे। वो अफ्रीका में घूमते घूमते कई नई जगह घूमे, कई नई नदियाँ उन्होंने पता किया, कई झरने उन्होंने पता किए, कई तरह के जानवर उनको पता चले, तो वो दुनिया को बताते चले गए। वो इतने जंगल में घुस गए थे कि कई साल हो गए वो वापस अपने देश नहीं गए। He did not go back to his own country. It was many years. So what happened? The people thought that he might have died in African jungles. तो उन्होंने लोगों ने सोचा कि वो शायद जंगल में ही, अफ्रीका के जंगल में ही मर गए होंगे। लेकिन उनके दोस्तों को विश्वास था कि वो अभी मरे नहीं, वो अभी वहीं हैं। तो उन्होंने एक पत्रकार को, जिसका नाम मॉर्टन स्टैनली था, उसे अफ्रीका भेजा। सो द फ्रेंड्स नेवर थॉट दैट ही इज स्टिल अलाइव, ही इज नॉट डेड। सो दे सेंड अ न्यूज़पेपर व्हाट यू कॉल मैन, young man, Morton Stanley, to Africa to find out where he is and how he is. Stanley searched for him a long time. Finally, he found him in a remote village, engaged in his work. Dr. Livingstone, I presume, said Stanley on meeting him. Yes, replied the old man. Stanley requested the famed explorer to return to England, as many of his friends were eager to see him. But he stayed on for a year more. However, he was not destined to return to his homeland. One morning, the people found him kneeling beside his bed, dead. The natives were greatly saddened by his death. He was their true friend. Stanley जो था वो उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा, और आखिरकार स्टैनली ने लिविंगस्टोन को ढूंढ लिया। एक बहुत ही अंदरूनी गांव में वो थे, वहाँ पे किसी काम में वो फंसे हुए थे। जब स्टैनली ने डॉक्टर लिविंगस्टोन को देखा तो उनसे कहा कि आपके मित्र आपको याद कर रहे हैं और उन्होंने मुझे भेजा है आपको यहाँ से लिवाने के लिए, आपको यहाँ से लेके जाने के लिए। स्टैनली सेड दैट आई हैव कम बिकॉज योर फ्रेंड हैव सेंड मी टू ब्रिंग यू बैक, बट ही सेड दैट आई वांट टू वर्क हियर फॉर वन मोर ईयर, आफ्टर दैट आई विल कम। एंड उन्होंने कहा कि मैं अभी 1 साल और यहाँ रुकूंगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। और स्टैनली को वापस उन्होंने भेज दिया। वो वहीं काम करते रहे, और एक दिन सुबह जब लोगों ने उनके कमरे में गए उनको बुलाने के लिए, तो वो घुटने टेके अपने बिस्तर के पास घुटने टेके हुए थे और वो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लोगों को बड़ा धक्का लगा। So one day, the natives of Africa, when they went in his room, they found him kneeling down near his bed. That means he was praying during the night time. He was praying, and at that time he died. The natives were very sad because he was their true friend. They emblemed his body and carried it to Zanzibar.
It took them 10 months to make that difficult journey. They didn't want to bury their beloved master in the jungles of Africa, but in his own homeland. From Zanzibar, the body was taken to England, where he was buried with all honors at Westminster Abbey. तो लोगों ने उनके शरीर में तेल वेल लगा के जो वहाँ का जो कस्टम था, रिचुअल्स था, उसे पूरा किया और उसे वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को जंजीबार लेके गए, जो एक कोस्टल एरिया है, अफ्रीका में एक कोस्टल एरिया है, जहाँ से उनको बाद में इंग्लैंड ले जाया गया। लेकिन जिस गांव में थे वहाँ से जंजीबार लाने के लिए उनके पार्थिव शरीर को लाने में 10 महीने लगे, क्योंकि बहुत ही कठिन रास्ता था, पहाड़ थे, उतरना चढ़ना बहुत काम था, बहुत कठिन था। फिर भी वो वहाँ लेके पहुँचे और वो वहाँ जंजीबार से उनके पार्थिव शरीर को इंग्लैंड ले जाया गया और वेस्टमिनिस्टर एबी जो एक चर्च है वहाँ पे उनको दफनाया गया। लोग नहीं चाहते थे कि उनके शरीर को यहाँ ही जंगल में दफनाया जाए। The people of Africa never wanted that Livingstone's body be buried in the forest of Africa. They wanted that his body should be taken back to his native place and buried there. For that, they worked very hard. 10 months it took for them to bring his body to Zanzibar, and from there it was taken to England. Many years have passed since Dr. David Livingstone died, but he continues to be remembered as a great man who spent his whole life in selfless service. कई साल हो गए उनकी मृत्यु को, लेकिन आज भी वो अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। आज भी लोग उनको याद करते हैं क्योंकि उनके सेल्फलेस वर्क के लिए। टुडे ऑल्सो पीपल रिमेंबर हिम, लव हिम फॉर हिज सेल्फलेस वर्क. I hope you might have understood the chapter. Thank you. Have a nice day.